बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उमर बेग, कैसे हैं आप लोग? How are you, my people, my family? Today we are going to install Oracle FX 21.1 and ORDS 21.4 with database 19C in Windows 10 InshaAllah quickly. आज हम ये सीखेंगे कि किस तरह से Oracle FX 21.1 और ORDS 21.4 को database 19C के साथ Windows 10 में इंस्टॉल किया जाता है जल्दी से। So first we will create a folder in C drive with the name 19C_21.1। सबसे पहले हम C drive के अंदर एक फोल्डर बनाएंगे 19C_21.1 के नाम का, और उस फोल्डर के अंदर दो मजीद फोल्डर बनाएंगे DB और ORDS के नाम के। And under this folder we further create two folder with the name DB and ORDS respectively. Extract database 19C in DB folder which we have just created. एक्सट्रैक्ट करेंगे database 19C को DB के फोल्डर के अंदर जो हमने अभी बनाया है। Extract ORDS 21.4 folder in ORDS folder which we have just created, so we do not need to copy and paste ORDS folder. अब हम ORDS 21.4 के फोल्डर को एक्सट्रैक्ट करेंगे ORDS के फोल्डर के अंदर जो हमने अभी बनाया है। तो हमें ORDS के फोल्डर को कॉपी करके उसको चस्पा करना नहीं पड़ेगा। The downloadable link of ORDS 21.4 is available. However, we have already downloaded. ORDS 21.4 का downloadable link जो है वो मौजूद है, अलबत्ता हमने उसको पहले ही डाउनलोड कर लिया है। Extract FX 21.1 in 19C_21.1 folder, so we do not need to copy and paste Apex folder. Apex 21.1 के फोल्डर को एक्सट्रैक्ट करेंगे 19C_21.1 के फोल्डर के अंदर। तो हमें Apex के फोल्डर को कॉपी करके उसको चस्पा करना नहीं पड़ेगा। The Java version which we are using is Java 8 Update 211। जो Java का वर्जन हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो Java 8 Update 211 है। रन डेटाबेस सेटअप विद एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स। डेटाबेस का सेटअप चलाएंगे एडमिनिस्ट्रेटर के राइट से। Option will be create and configure a single instance database. Hit next button. Option create and configure a single instance database करेगा। Next का बटन दबाएं। Option will be desktop class. Hit next button. Option desktop class रहेगा। Next का बटन दबाएं। Option will be use Windows built-in account. You can use other option as well. Hit next button. Use Windows built-in account का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, आप कोई दूसरा ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। Next का बटन दबाएं। Now define global database name, password and confirm password from your choice. Uncheck create as container database option and hit next button. Global database name देंगे, password देंगे, confirm password देंगे अपनी मर्जी से, और अनचेक करेंगे create as container database के ऑप्शन को और next का बटन दबाएंगे। Now we will hit install button। अब हम install का बटन दबाएंगे।
Oracle database 19c has installed. Hit close button. Oracle database 19c जो है वो इंस्टॉल हो चुका है. क्लोज का बटन दबा दें. Now open command prompt and reach where apex folder is available. कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे, वहाँ जाएंगे जहाँ apex का फोल्डर मौजूद है और वहाँ जाने के बाद ये कमांड चलाएंगे. When we reach there, run this command. Now connect with sys/sysdb. कनेक्ट होंगे sys/sysdb से and check SGA maximum size by running show parameter SGA command. If it is less than 3000 MB, then we have to increase it. SGA maximum size पता करेंगे show parameter SGA की कमांड चला के. अगर ये 3000 MB से कम हो गए, 3000 MB से कम होगा तो हम इसको बढ़ाएंगे. तो ये 3000 MB से कम है. It is less than 3000 MB. Now we will shut down database by running shut immediate command. अब हम database को बंद करेंगे shut immediate की कमांड चला के. Now start database by running startup command. database को start करेंगे startup की कमांड चला के. Now check SGA maximum size again in order to make sure that the changes we did has reflected or not. अब हम दोबारा SGA मैक्सिमम साइज पता करेंगे ताकि ये तसल्ली कर लें कि जो तब्दीली हमने की है वो हो चुकी है या नहीं. So the changes we did has reflected. तो जो तब्दीली हमने की है वो हो चुकी है. Now we will install Apex by running this command. अब हम Apex को इंस्टॉल करेंगे ये कमांड चला के. Oracle Apex 21.1 has installed. Oracle Apex 21.1 जो है वो इंस्टॉल हो चुका है. Now we will run this command. User will be admin. Provide email and password from your choice. अब हम ये कमांड चलाएंगे. यूजर जो है वो एडमिन रहेगा. ईमेल और पासवर्ड आप अपनी मर्जी से दे दें. नाउ वी विल रन दिस कमांड. अब हम ये कमांड चलाएंगे. प्रोवाइड पासवर्ड फॉर एपेक्स लिस्टनर एंड एपेक्स फ्रेश पब्लिक यूजर व्हिच विल बी ऑरेकल इन लोअरकेस. अब हम ये कमांड चलाएंगे. पासवर्ड देंगे एपेक्स लिस्टनर और एपेक्स फ्रेश पब्लिक यूजर को जो कि ऑरेकल होगा छोटे हरफों में. We will run this command. अब हम ये कमांड चलाएंगे. Exit this command prompt. इस command prompt को बंद कर दें. Open new command prompt with administrator rights. नया कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे एडमिनिस्ट्रेटर के राइट से. वहां जाएंगे जहां ORDS का फोल्डर मौजूद है and reach where ORDS folder is available. And when we reach there, run this command. जब हम वहां पहुंच जाएंगे तो फिर ये कमांड चलाएंगे. Now we will provide a configuration path where we want to configure ORDS. अब हम कॉन्फ़िगरेशन का पता देंगे जहाँ पे हम ORDS को कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं. Enter. If your port is 1521, then hit enter. If your port is different, then define your port and hit enter button. अगर आपकी पोर्ट 1521 है तो आप एंटर का बटन दबा दें. अगर आपकी पोर्ट मुख्तलिफ है तो आप अपनी पोर्ट लिखें और फिर एंटर का बटन दबाएं. टू फाइंड योर पोर्ट,
कम टू Oracle और DB19 होम 1 रिपोर्ट पता करने के लिए Oracle और DB19 होम 1 में आए, एक्सपेंडेड इसको खोल लें, कम टू नेट मैनेजर, ओपन इट, नेट मैनेजर पे आए, इसको खोल लें, ऑप्शन विल बी ट्रू, ऑप्शन 2 रहेगा, एंटर, प्रोवाइड योर सेट, अपनी सेट बता दें, एंटर, एंटर, provide password and confirm password for ORDS public user which will be Oracle in lower case, confirm password देंगे ORDS public user को जो कि Oracle रहेगा छोटे हरफों में, एडमिनिस्ट्रेटर यूजर नेम विल बी सिस, एडमिनिस्ट्रेटर यूजर नेम जो है वो सिस रहेगा, प्रोवाइड पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दे दें, एंटर, 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 provide password and confirm password for Apex public user which will be Oracle in lower case, पासवर्ड और confirm password देंगे Apex public user को जो कि Oracle रहेगा छोटे हरफों में, enter, provide password and confirm password for Apex listener and Apex public user which will be Oracle in lower case, पासवर्ड और confirm password देंगे Apex listener और Apex public user को जो कि Oracle रहेगा छोटे हरफों में, enter. Now copy images folder from the Apex installation folder. कॉपी करेंगे images के फोल्डर को Apex के installation folder में से और उसको चस्पा करेंगे यहाँ and paste it to this path. Enter. Now provide a path to Apex static resource location till images folder. अब हम Apex स्टैटिक रिसोर्स लोकेशन को पता देंगे इमेजेस के फोल्डर तक का, एंटर, डिफाइन योर पोर्ट और लीव इट एज इट इज, आप पोर्ट बता दीजिए अपनी मर्जी से या इसको ऐसे ही रहने दें. When Oracle REST data services initialize a pair, we can access Oracle Apex 21.1. Remember, do not close this command prompt because if it closes for any reason, we cannot access Oracle Apex 21.1, but we can reopen it as well. जब Oracle REST data services initialize लिखा आ जाएगा तो हम Oracle Apex 21.1 को इस्तेमाल कर लेंगे. ये बात याद रखिएगा कि इस कमांड प्रॉम्प्ट को बंद मत करिएगा, क्योंकि अगर ये किसी भी वजह से बंद हो जाएगा तो हम Oracle Apex 21.1 को इस्तेमाल नहीं कर सकते. अलबत्ता हम इस कमांड प्रॉम्प्ट को दोबारा खोल सकते हैं. ओपन कमांड प्रॉम्प्ट विद एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स. कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे एडमिनिस्ट्रेटर के राइट से. वहां जाएंगे जहां ORDS का फोल्डर मौजूद है, एंड रीच वेयर ORDS फोल्डर इज अवेलेबल, एंड व्हेन वी रीच देयर रन दिस कमांड. जब हम वहां पहुंच जाएंगे तो फिर ये कमांड चलाएंगे. Oracle Apex 21.1 and ORDS 21.4 with database 19C has installed in Windows 10. Oracle Apex 21.1 और ORDS 21.4 database 19C के साथ Windows 10 में इंस्टॉल हो चुका है. जज़ाकुमुल्लाहु खैरा. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.